Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Shahid Latif, Associate Professor at Department of Computer Science, Sarhad University, Peshawar. Today we will learn a new topic from the course of Electronics 1. Remember that the course code for Electronics 1 is EE216, while this is 2-1 credit hour course. It means that we have to cover 2 hour theory per week, while there is 1 credit hour which is equal to 3 contact hour lab work requirement as well. The topic we will discuss in today's lecture is about bipolar junction transistor characteristics and the bipolar junction transistor parameters, including the voltage and the current parameters. Course details are such that we are in week number 7 and today we will learn lecture number 14. And again, lecture number 14 is about some other topics related to the bipolar junction transistor, like the VI characteristic curve or the output characteristic curve of a BJT, and the voltage and current parameters of the BJT, which is actually chapter number 4 of our textbook. Before starting our new lecture, let's have a look on the previous lectures. If you remember, previously in lecture number 1 we introduced the course of Electronics 1 by explaining the course description, the tentative course outlines, the recommended books, the prerequisite details, and the definition, formal and informal definition of the term electronics. In lecture number 2, we discussed the atom and the structure of an atom by explaining the Bohr atomic model, the atomic number of an atom, the particles of an atom, that is electrons, protons, neutrons, and the nucleus. So similarly, valence electrons, the shells, and a process where the losing or gaining of electrons takes place, that is the ionization. In lecture number 3, we classify the matter on the basis of the conductivity, and as a result we have 3 classes: the insulators, the conductors, and the semiconductors. If you remember, insulators are those materials which cannot conduct under the normal conditions, while conductors can easily conduct the electrical or the electric current. Similarly, semiconductors are those materials which can be used either as insulator or as a conductor. We also discuss the energy bands, the valence band and the conduction band for the semiconductors, and the covalent bond in semiconductors and the silicon crystal. Then in lecture number 4 we discuss the conduction in semiconductors or current in semiconductors. Here we discuss the 2 types of a semiconductor, that is the N type and the P type. So in lecture number 4 we start lecture number 4 by discussing what is an electron hole pair, what is the recombination process where electron meets again with the hole, what are the 2 types of a current, that is electron current and hole current in semiconductors, what is the doping. Doping is a process where we add impurities in our intrinsic semiconductor. So as a result of a doping we have 2 types of a semiconductor, that is the N type and P type. Here we also discuss that the formation of the N type and P type semiconductors. In lecture number 5 we discuss the formation of the PN junction and the depletion region across that PN junction. We also discuss the energy diagrams during the formation of the PN junction and during the depletion region formation. In lecture number 6 we discuss the PN junction diode and its operation. Here we connect a diode in its forward bias and then in a reverse bias. We also define that what is biasing and how a diode can be connected in its forward bias mode and in its reverse bias mode. So when we connect a diode in its forward bias mode, what is the forward current and the forward voltage? Similarly, when we connect a diode in its reverse bias mode, so what is the reverse current, the reverse voltage, and the reverse breakdown? In lecture number 7, we discuss the VI characteristic curves of a diode. VI means voltage and current, so that is a characteristic curve or a graph which shows the relation of a voltage and current when a diode is connected in forward bias or in reverse bias. So by combining the forward and reverse bias characteristic curve, we will have a complete VI characteristic curve of a diode. Here we also discuss the diode approximations, that is the ideal diode model, the practical diode model, and the complete diode model. In lecture number 8 we start the discussion on diode application, and here we discuss one of the most important application or a most common application of a diode, that is rectifier circuit. The 2 types of rectifier, that is half-wave rectifier and the full-wave rectifier.
In half-wave rectifier section, we discuss the operation and the block diagram of a half-wave rectifier circuit. We also discuss the average output voltage of a half-wave rectifier. We discuss the peak inverse voltage of the half-wave rectifier circuit. Then we discuss the full-wave rectifier circuit by discussing its two types: center tape transformer-based full-wave rectifier circuit and the bridge full-wave rectifier circuit. In lecture number 9, we discuss other two important applications of a diode, that is the limiters, which can be termed as a clippers. Diode limiters are diode clippers, and the clampers, which can also be termed as a DC restorer. We discuss what is limiter and what are the types of a limiter, that is positive limiter, negative limiter, and the dual limiter. We also discuss the biased positive, biased negative, and biased dual limiter. We discuss the diode clamper or the DC restorer and its two types, that is positive and negative clampers. In lecture number 10, we start a discussion on the special purpose diode, and here we discuss one of the most important and most popular special purpose diode, that is Zener diode. We discuss the operation of a Zener diode, the breakdown, the two types of a breakdown in a Zener diode, that is Zener breakdown and the avalanche breakdown. We also discuss the breakdown characteristics of a Zener diode. We discuss the Zener regulation and the equivalent circuits of a Zener diode. In lecture number 11, we discuss the Zener voltage regulation and the Zener limiting action. Here the Zener regulation with a variable input voltage. We explain that how a Zener diode can regulate the input voltage or the variable input voltage. We also discuss the three types of the Zener limiting actions, that is positive limiting, negative limiting, and the dual limiting. In lecture number 12, we discuss various special purpose diodes, including the varactor diode, optical diode like light emitting diode, quantum diode, and the photodiode. Some other special purpose diodes like laser diode, Schottky diode, pin diode, step recovery diode, tunnel diode, and current regulator diode were also included in this lecture. In lecture number 13, we discuss the bipolar junction transistor. We define that what is a transistor, what are the two types of a transistor, that is BJT and FET. So starting with the BJT, what are the two types of a BJT, that is the NPN and the PNP. Then we discuss the structure of the BJT for both NPN and PNP. We discuss the symbols of both NPN and PNP BJT transistors. We also discuss the basic operation of a NPN type of a BJT, where the base emitter junction is forward bias and the base collector junction was in reverse bias. We also discuss the three transistor currents, that is emitter current, collector current, and the base current involved in the bipolar junction transistor. Today, in lecture number 14, we will discuss the some other important terms related to bipolar junction transistor, that is the characteristics and the parameters of a BJT. We will discuss the transistor DC biasing, the DC beta or beta DC simply, which is the current gain, another current gain parameter, the alpha or alpha DC. We will also discuss the current and the voltage analysis of a BJT. After that, we will discuss the collector characteristic curve, or which can also be termed as a output characteristic curve, and finally the cutoff and the saturation condition of a BJT. Recommended books for this course include Electronic Devices with Conventional Current version, authored by Thomas L. Floyd, and we are using 10th edition of this book. If you have any latest edition or an even an older edition, it is also acceptable. The second book for this course is Electronic Devices with Electron Flow version, authored by the same author with the same edition. So these are the two recommended books for the course of Electronics 1, but you will see that majority of the contents of this lecture as well as this course are taken from the Electronic Devices with Conventional Current version. Before going towards the characteristic curve of a transistor and the voltage and current parameters of the transistor, let's have a look at the type of the transistors.
This is just for the revision of the previous knowledge. If you remember, transistor can be classified into types, that is the bipolar junction transistor and the field effect transistor. Further, we divide the BJT transistor in NPN and PNP transistor, while FET can be divided into GFET and MOSFET type of the FETs. Then GFET can further be divided into N-channel GFET and P-channel GFET. N-channel GFET means that type of GFET where the channel is made of N-type material, while that type of GFET where the channel is made of a P-type material will be termed as a P-channel GFET. Similarly, MOSFET can be divided into D-MOSFET and E-MOSFET types. D-MOSFET can be further divided into N-channel D-MOSFET and P-channel D-MOSFET. Similarly, E-MOSFET can be divided into N-channel E-MOSFET and P-channel E-MOSFET. We have also discussed the structure of a BJT. So here you can see that BJT is constructed with 3 doped semiconductor regions. 3 layers of semiconductor material are used in the construction of a NPN and PNP type of a BJT. These 3 regions can be termed as emitter region, base region and the collector region. Here you can see that for the NPN we have 3 regions, that is 2 or N-type materials and the 1 is a P-type material, and you can see that the P-type material is sandwiched between the 2 N-type materials or 2 N-type regions. The lower region, N-type region, is known as an emitter, and the terminal connected with that will be termed as a E, representing the emitter section or the emitter terminal. Similarly, the base or the middle P region is representing the base region of the transistor, and it is denoted by B or indicated by B. Similarly, the upper N-type region is the collector region of the transistor, represented by C. Similarly, the PNP is also made of 3 doped semiconductor regions: emitter, base and the collector. It has 3 terminals: the emitter, base and the collector. These 3 regions are separated by 2 PN junctions, यानी यहाँ पर हमारे पास 2 PN junctions involved हैं. बेस और एमिटर के बीच में जो जंक्शन है that is known as a base emitter junction, और बेस और कलेक्टर के बीच में जो जंक्शन है that will be termed as a base collector region. These schematic symbols for NPN and PNP types of BJT are shown over here. हम देख सकते हैं कि दोनों सिंबल्स में जो डिफरेंस है वो एमिटर के ऊपर ये एरो का निशान है. If this arrow is pointing out at the emitter, so that will represent the NPN type of the BJT, and if the arrow is pointing in at the emitter terminal of the transistor of the symbol, so we will say that that is a PNP type of a ट्रांजिस्टर. यानी इन दोनों में मेन डिफरेंस इस एरो के निशान का है. अगर ये एरो बाहर की तरफ है तो ये एनपीएन टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है बीजीटी के, और अगर ये अंदर की तरफ है तो ये पीएनपी को रिप्रेजेंट कर रहा है. लेकिन याद रखने वाली बात ये है कि ये एरो जो है दोनों सूरतों में एमीटर पर लगा हुआ है. यानी अगर आपको कहीं पर ये सिंबल दिखाई दे और जिस टर्मिनल पर ये एरो का निशान हो तो आपको पता होना चाहिए कि दैट इज द emitter terminal of the BJT transistor. Now, starting with the characteristics and the parameters of a transistor. The transistor is connected to DC bias voltage as shown in figure on the next slide for both the NPN and the PNP types of the BJT. यानी यहाँ पर इस फिगर में हम देख सकते हैं कि NPN और PNP दोनों टाइप्स को DC सोर्सेस के साथ कनेक्ट किया गया है यूजिंग देयर स्कीमेटिक सिंबल. BJT का हमने यहाँ पर स्कीमेटिक सिंबल इस्तेमाल किया हुआ है. तो हियर यू कैन सी दैट एरो जो है वो बाहर की तरफ है और एमीटर पर है, so that is
representing the NPN type of the BJT, जबकि एरो अंदर की तरफ जो है वो PNP को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने दोनों टाइप्स के साथ बैटरीज कनेक्ट की हुई हैं, और ये बैटरीज चूंकि DC बैटरीज हैं, so that's why that is termed as a DC biasing of the transistor. After connecting the VBB and VCC, we can see that the base emitter junction of the transistor is forward biases due to the VBB. यानी हमारा जो VBB है, जो DC सोर्स है, वो बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस बनाता है, जबकि VCC जो है वो बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बाइस बनाता है। सो फॉर बाइसिंग वी कैन यूज सेपरेट बैटरी सिंबल। हम ये जो बाइसिंग कर रहे हैं, जो DC सोर्सेज लगा रहे हैं, इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से हम हासिल कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पहला तरीका ये है कि हम दोनों बैटरीज के लिए, VBB के लिए और VCC के लिए अलग से बैटरी सिंबल्स इस्तेमाल कर लें, जैसा कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर इस स्लाइड में शो किया हुआ है। दोनों बैटरीज जो हैं वो अलग अलग से सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट की गई हैं। वी कैन यूज अ सिंगल DC पावर सप्लाई, या दो बैटरीज के बजाय हम एक DC पावर सप्लाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट चूंकि VCC और VBB की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, सो व्हाट वी हैव टू डू, VCC नॉर्मली टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द पावर सप्लाई आउटपुट। यहाँ अगर हम सिर्फ VCC इस्तेमाल कर लें तो VCC को हम डायरेक्टली कलेक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे, जैसा कि अभी इस सूरत में यहाँ पर मौजूद है, जबकि VBB कैन बी प्रोड्यूस्ड विद अ वोल्टेज डिवाइडर। और चूंकि हम इस VBB की जगह पर बैटरी इस्तेमाल नहीं कर रहे, सो व्हाट वी हैव टू डू, एक ही बैटरी से VCC से हमने ये VBB की कंडीशन जो है वो पूरी करनी है, या इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है। सो उसके लिए फिर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर का काम ये होगा कि वो इस VCC जो कि एक हाई वोल्टेज होगा, उसको हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक VBB की जो वोल्टेज होगी उस लेवल पर डिवाइड करके बेस पे उसको प्रोवाइड करेगा। यानी आप सिंगल बैटरी के ज़रिए से भी बाइसिंग कर सकते हो, या आप दो डिफरेंट बैटरीज इस्तेमाल करके भी बाइसिंग कर सकते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए हम फिल वर्क्स दो बैटरीज जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इसी फिगर का जो पार्ट बी है उसमें PNP ट्रांजिस्टर शो किया गया है। यहाँ पर भी हमारे पास VBB और VCC दो ही बैटरीज इस्तेमाल हुई हैं। जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि आप देख सकते हैं कि जो बैटरीज की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो चुकी है। यानी इस केस में हमारे पास बैटरी का पॉजिटिव जो था वो बेस के साथ और नेगेटिव एमिटर के साथ था। यहाँ पर अगर हम VBB को देखें तो इसका नेगेटिव जो है बेस के साथ और पॉजिटिव जो है वो एमिटर के साथ कनेक्टेड है। सो मेन डिफरेंस ही NPN और PNP में डायरेक्शन ऑफ ए करंट है कि NPN में जो करंट की डायरेक्शन होगी, PNP में वो रिवर्स होगी, यानी उसकी अपोजिट होगी। हम देख सकते हैं IB जो है वो इन हो रहा है, IC इन हो रहा है, जबकि IE जो है वो एग्जिट हो रहा है एज अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट फॉर द NPN। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सर्किट वही है, ठीक है, सिर्फ फर्क ये है कि हमने NPN की जगह पर PNP इस्तेमाल किया हुआ है, बाकी सारी वही चीज़ें हैं। अगर हम करंट की डायरेक्शन को देखें तो हम देख सकते हैं कि IB यहाँ पर एग्जिट हो रहा है, IC भी एग्जिट हो रहा है, जबकि IE जो है वो इन हो रहा है। तो ये तीनों करंट जो है NPN के लिहाज से अगर हम देखें तो अपोजिट डायरेक्शन में है। What is beta DC and alpha DC? Beta DC is representing the current gain of a transistor. गेन से मुराद क्या है कि जब हम आउटपुट करंट को इनपुट करंट पर डिवाइड करते हैं, दैट इज नोन एज अ करंट गेन। सो बीटा DC से मुराद DC करंट गेन ऑफ ए ट्रांजिस्टर है। वी कैन से दैट द रेशियो ऑफ DC कलेक्टर करंट, क्योंकि कलेक्टर हमारे पास आउटपुट के तौर पर यूज हो रहा था, तो जो कलेक्टर करंट होगा और जो बेस करंट होगा, इन दो जो कि इनपुट करंट है इस वक्त, इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज नोन एज अ बीटा DC। जब हम उसके लिए फार्मूला लिखते हैं, सो वी कैन से दैट बीटा DC मस्ट बी इक्वल टू IC डिवाइडेड बाय IB। The typical values for the beta DC range from less than 20 to 200 or even higher। नॉर्मली अगर हम मार्केट में देखें तो 20 से लेकर 200 तक की वैल्यूज के
ट्रांजिस्टर हमें इजीली मिल सकते हैं या इजीली जो है वो अवेलेबल हैं। यानी करंट गेन जो है वो 200 तक हो सकता है या इवन इससे भी ज़्यादा। यूजुअली डेजिग्नेटेड एज एन इक्विवेलेंट हाइब्रिड पैरामीटर HFE ऑन ट्रांजिस्टर डाटा शीट्स। ट्रांजिस्टर की जो डाटा शीट्स हैं उनमें नॉर्मली आप देखेंगे कि या तो बीटा डीसी मेंशन होगा या फिर बीटा डीसी की जगह पर HFE से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। व्हाट इज अल्फा डीसी? बिल्कुल बीटा डीसी की तरह अल्फा डीसी इज अ रेशियो ऑफ ए डीसी कलेक्टर करंट IC तो डीसी एमिटर करंट IE। ये भी हमारे पास करंट गेन ही है, लेकिन इस कंडीशन में या इस पैरामीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो आउटपुट करंट है वो इस वक्त कलेक्टर करंट है, जबकि इनपुट करंट को हम एमिटर करंट के तौर पर कंसिडर करते हैं। सो आउटपुट करंट IC और एमिटर करंट इन के बीच में जो रिलेशन है, जो रेशियो है, दैट इज नोन एज अल्फा डीसी। द अल्फा इज a less used parameters than the beta in transistor circuit। और अल्फा को हम नॉर्मली बीटा के मुकाबले में कम ही इस्तेमाल करते हैं। बाय द वे अगर हम इसके लिए फार्मूला लिखें सो हम देख सकते हैं कि अल्फा डीसी विल बी इक्वल टू IC that is collector current divided by emitter current। The typical values of the alpha DC range from 0.95 to 0.99 or even greater than that। मतलब 0.95 से लेकर 0.99 तक इसकी टिपिकल रेंज है या टिपिकल वैल्यूज हैं जो कि हमारे पास ट्रांजिस्टर डेटा शीट्स पर हमें गिवन होती हैं। जब भी आप कोई ट्रांजिस्टर खरीदेंगे तो उस पर अल्फा डीसी और बीटा डीसी दोनों की वैल्यूज जो हैं वो मौजूद होंगी। हाउएवर अल्फा डीसी को हम बीटा डीसी के मुकाबले में कम ही इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली अल्फा डीसी जो होगा वो हमेशा ही लेस देन 1 होगा। यानी अगर हम इसकी ग्रेटर वैल्यू की बात करें तो हम कह सकते हैं 0.99999 बट दैट विल बी ऑलवेज लेस देन 1। Reason is that IC is always slightly less than IE by the amount of IB। और पिछली लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ था एक इक्वेशन या एक रिलेशन हमने पढ़ा हुआ था करंट्स के लिए कि जो IE है एमिटर करंट वो IC और IB का सम है। तो हम देख सकते हैं कि IB की अमाउंट चाहे कितनी ही कम ना हो, जब ये IC के साथ मिलता है तो IE की वैल्यू बनती है। तो अंडरस्टूड है कि IE जो है वो IC से बड़ा ही है, क्योंकि इन दोनों का सम ही हमारे पास IE के बराबर होगा। और ये तो पॉसिबल है नहीं कि IB जो है वो 0 के बराबर, क्योंकि अगर IB 0 के बराबर होगा तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास एमिटर बेस एमिटर जंक्शन है वो रिवर्स बायस में होगा या ऑफ कट ऑफ मोड में होगा। तो हम कह सकते हैं कि उस वक्त हमारे पास वो जंक्शन रिवर्स बायस में होने की वजह से या कट ऑफ मोड में होने की वजह से कंडक्शन करवा ही नहीं सकेगा। तो IB की कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर होती है और ये वैल्यूज IC के साथ मिलकर IE बन रहा है। सो इसी वजह से हम कहते हैं क्योंकि हम IC को IE पे डिवाइड कर रहे हैं, यानी छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू पे डिवाइड कर रहे हैं, तो हमेशा इस अल्फा की वैल्यू जो होगी वो लेस देन 1 ही हुआ करेगी। For example, if IE is equal to 100 milliampere and IB is equal to 1 milliampere, so we can say that IC will be equal to 99 milliampere। यानी अब IC के मुकाबले में IB काफ़ी स्मॉलर है, बट स्टिल ये दोनों मिलकर IE को बना रहे हैं। So we can say that IE is greater than the IC। And now if we want to find the alpha DC, so what we have to do, we have to divide the 99 milliampere over 100 milliampere and you will get the value of a 0.99। An example is given where we have to determine the DC current gain, that is beta DC, and the emitter current gain, the emitter current IE for our transistor, where IB is given which is equal to 50 microampere and IC is given which is equal to 3.65 milliampere। दो चीज़ें हमें गिवन है और दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है। बीटा डीसी फाइंड करना है और एमिटर करंट को फाइंड करना है। सो द फार्मूला फॉर बीटा डीसी इज इक्वल टू 1 over C divided by 1 over B। Here IC is equal to 3.65 milliampere, जबकि IB की वैल्यू जो है 50 माइक्रो एम्पियर है। रिमेंबर दैट
मिली एम्पियर इज रिप्रेजेंटिंग 10 पावर -3, जबकि माइक्रो इज रिप्रेजेंटिंग 10 पावर -6। जब हम इन वैल्यूज पुट करेंगे मिली और माइक्रो की, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे एक दूसरे के ऊपर, तो वी विल हैव द 73 एज ए बीटा डीसी। इसका मतलब क्या है कि हमारा ये ट्रांजिस्टर इस कंडीशन में 73 टाइम्स करंट को इनहेंस करेगा या एम्पलीफाई करेगा, इसी वजह से इसको एम्पलीफायर कहा जाता है। Here I is equal to IC plus IB, जो फार्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, IC और IB की वैल्यू को आपस में ऐड करेंगे। IC इज गिवन इन मिली एम्पियर और IB जो है वो माइक्रो एम्पियर में है, तो हम इन दोनों को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। सो व्हाट वी हैव टू डू, या तो हमें इस 50 माइक्रो एम्पियर को मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना होगा, या फिर हमें इस 3.65 मिली एम्पियर को माइक्रो एम्पियर में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद जब दोनों की यूनिट्स सेम हो जाएंगी तब हम इसको ऐड कर सकते हैं। सो अगर हम इस 50 माइक्रो एम्पियर को कन्वर्ट करें मिली में, यानी जब आप माइक्रो से मिली बना रहे हैं तो आपकी वैल्यू जो है वो कम होगी, क्योंकि आप बड़ी यूनिट की तरफ कन्वर्जन कर रहे हैं। तो दैट विल बी इक्वल टू 0.050 मिली एम्पियर। अगर हम इसको यूं लिखी 0.05 मिली एम्पियर, और जब आप इस मिली एम्पियर, अब चूंकि मिली एम्पियर यहाँ पर भी है, मिली एम्पियर यहाँ पर भी है, तो अब हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। एंड नाउ यू विल हैव द 3.70 मिली एम्पियर एज अ IE. Now the current and voltage analysis. करंट और वोल्टेज को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? कंसिडर द बेसिक ट्रांजिस्टर बायस सर्किट कॉन्फ़िगरेशन। अगेन यहाँ पर हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर गिवन है जिसके साथ VBB और VCC कनेक्टेड है। The three transistor DC currents which are IB, IC and IE shown, and 3 DC voltages can be identified. हमारे पास 3 DC currents है और 3 DC voltages हैं। Here you can see that IB जो है वो बेस करंट को रिप्रेजेंट करता है, IE एमिटर करंट को, IC जो है वो कलेक्टर करंट को रिप्रेजेंट करता है, VBE वोल्टेज एट बेस विद रिस्पेक्ट टू एमिटर, या आप कह सकते हैं कि बेस टू एमिटर वोल्टेज, यानी बेस और एमिटर के बीच, इन दो टर्मिनल्स के बीच में जो वोल्टेज है दैट इज VBE। सिमिलरली VCB इज रिप्रेजेंटिंग वोल्टेज एट कलेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द बेस। C एंड B दो टर्मिनल्स, कलेक्टर और बेस टर्मिनल्स के बीच में जो वोल्टेज है that is represented by VCB, and similarly VC is representing the voltage at collector with respect to the emitter. कलेक्टर पर वोल्टेज है with respect to the emitter, या आप यूं कह लें कि कलेक्टर और एमिटर के जो टर्मिनल्स हैं उनके बीच में जो वोल्टेज है that is represented by VCE. Now the base bias voltage source VBB, जिस VBB को हम base bias वोल्टेज सोर्स कहते हैं। फॉरवर्ड बायस इज द BE जंक्शन। इस VBB की वजह से जो बेस एमिटर जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस बन जाता है। इफ यू रिमेंबर, जिस तरह हमने फॉरवर्ड बायस डायोड पढ़ा था कि जिसमें हमारे पास एक P टाइप मटेरियल होता है और एक N टाइप मटेरियल होता है, से दैट इज अ P टाइप N टाइप मटेरियल, P के साथ एनोड है और N के साथ जो है वो कैथोड है। तो जब हम इसकी बाइसिंग करते थे फॉरवर्ड बायस में, तो बैटरी को हम यूं कनेक्ट करते थे। यहाँ पर भी वही अंदाज है कि बैटरी का पॉजिटिव बेस के साथ जो कि P टाइप मटेरियल है, और बैटरी का नेगेटिव जो है वो एमिटर के साथ जो कि N टाइप मटेरियल कनेक्टेड है। तो बेस एमिटर जंक्शन हमारा क्या होगा, VBB की बदौलत फॉरवर्ड बायस में होगा। इट हैज़ अ नॉर्मल फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ ए 0.7 वोल्ट। और अगर ये हमारे पास सिलिकॉन का बना हुआ डायोड था तो हमने पढ़ा हुआ था कि इसने 0.7 कंज्यूम करने हैं। तो सेम इज द केस हियर, यहाँ पर भी चूंकि सिलिकॉन का बना हुआ PN जंक्शन है, सो इट विल कंज्यूम या इट विल ड्रॉप द वोल्टेज ऑफ ए 0.7 एज अ VBE। द कलेक्टर बायस वोल्टेज सोर्स VCC, अगर हम सेकेंड लूप में इसके देखें तो वहां पर हमारे पास VCC था मेन वोल्टेज सोर्स। ये VCC वोल्टेज क्या करता है, इट रिवर्स बायसेस द बेस जंक्शन। इस VCC के बदौलत जो बेस कलेक्टर जंक्शन होता है वो रिवर्स बायस में होता है। रिवर्स बायस के लिए क्या कंडीशन थी, अगर हम इसके जिस तरह डायोड था और इस डायोड के साथ अगर हम बैटरी के टर्मिनल्स को यूं कनेक्ट कर ले
कि डायोड बैटरी का नेगेटिव डायोड के पॉजिटिव के साथ और बैटरी का पॉजिटिव डायोड के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड होगा तो दैट विल बी द रिवर्स बायस कंडीशन। तो हम पीछे जाकर डायग्राम में देख सकते हैं कि VCC का जो पॉजिटिव है वो कलेक्टर के साथ कनेक्टेड था जो कि एन टाइप मटेरियल था, और VCC का जो नेगेटिव है वो इमेटर के थ्रू बेस के साथ कनेक्टेड था, यानी पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड था। सो हम कह सकते हैं कि बेस कलेक्टर जंक्शन जो है वो VCC के बदौलत रिवर्स बायस में होगा। Since the emitter is at ground or 0 volt, so by Kirchhoff's voltage law, the voltage across RB is equal to VRB is equal to VBB minus VBE। अब जो पहला लूप हमारे पास बन रहा था उस पहले लूप में अगर हम देखें तो तीन चीजें हैं। एक बेस के जो RB है बेस रेजिस्टर उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, एक हमारे पास वोल्टेज पावर सप्लाई है जो कि VBB से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ था, और एक हमारे पास बेस और एमीटर के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होना है यानी जंक्शन के अक्रॉस। तो हम कहते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ के मुताबिक जितना वोल्टेज आप प्रोवाइड करोगे वो ड्रॉप होने वाले तमाम वोल्टेजेस के सम के बराबर होगा। यानी इस इक्वेशन को एक्चुअल में यूं लिखा जा सकता है कि VBB इज इक्वल टू VRB जो कि रेजिस्टर RB के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है प्लस VBE जो कि बेस एमीटर जंक्शन के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। क्योंकि इस लूप में यही दो चीजें हैं जहां पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो हमने इन दोनों को यूं मेंशन किया हुआ है। अब अगर हमें VRB मालूम करना है तो VBB जो कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं उससे VBE जो कि ड्रॉप हो रहा है जो कि मालूम है कि सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट होगा, हमने सिंपल इसको माइनस कर देना है एंड वी विल गेट द VRB। आल्सो बाय ओम्स लॉ हमें पता है V इज इक्वल टू IR होता है, तो VRB के क्रॉस कितना वोल्टेज है, अगर हमारे पास IB की वैल्यू मौजूद है, हमारे पास रेजिस्टर RB की वैल्यू मौजूद है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर। Substituting for VRB अगर हम इसको प्रीवियस इक्वेशन में डाल दें तो वी कैन से दैट IB into RB is equal to VBB minus VBE, यानी VRB की जगह पर हमने IR जो है वो डाल दिया। Now we are searching for the IB, so हम इस रेजिस्टर को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पर ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा एंड हेंस वी हैव अ फार्मूला फॉर फाइंडिंग द IB। हम इस तरीके से इस फार्मूले के जरिए से IB की वैल्यू को मालूम कर सकते हैं। बिल्कुल यही कंसेप्ट अगर हम सेकेंड लूप जो कि कलेक्टर और एमीटर के बीच में था अगर हम वहां पे अप्लाई करें सो वी विल हैव द VCC इज इक्वल टू VRC प्लस VCE, जिस तरह KVL के थ्रू हमने VBB के लिए मालूम किया था, बिल्कुल उसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो VCC है वो टोटल वोल्टेज है और ये ड्रॉप हो रहा है RC के अक्रॉस और ये ड्रॉप हो रहा है कलेक्टर और एमीटर जंक्शन के अक्रॉस। तो अगर हमें VRC मालूम करना है या IC मालूम करना है, हम इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके आएंगे, सो वी विल हैव द VCC माइनस VRC। अगेन हमें पता है कि VRC इज इक्वल टू IC इंटू RC, यानी V इज इक्वल टू IR ओम्स लॉ के थ्रू। तो हम यहाँ से भी IC की वैल्यू मालूम कर सकते हैं या एटलीस्ट इसको पुट करेंगे IC इंटू RC तो हमारे पास VCE की वैल्यू हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं। अगर IC की वैल्यू मालूम करना हो तो वो दो तरीकों से मालूम किया जा सकता है। एक तो हमारे पास IC इज इक्वल टू बीटा IB का फार्मूला है, क्योंकि हम ऑलरेडी IB मालूम कर चुके हैं और बीटा हमें गिवन होगा, तो बीटा की वैल्यू और IB की वैल्यू को मल्टीप्लाई करो यू विल हैव द IC। ये हमारे पास बीटा का फार्मूला था कि बीटा DC इज इक्वल टू IC डिवाइडेड बाय IB। तो IB मालूम करना है, ठीक है, सिंपल क्या सॉरी IC डिवाइड बाय IB के बराबर था। IC मालूम करना है तो IB को दूसरी तरफ ले जाके मल्टीप्लाई करो, सो बीटा IB इज इक्वल टू IC के बराबर हो जाएगा। यानी गेन का जो फार्मूला था उससे भी हम IC मालूम कर सकते हैं। या फिर अगर हम इस इक्वेशन को यूज करना चाहें तो हम IC RC को यहीं पे छोड़ देते हैं या इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे, VCE को इक्वेशन के राइट साइड पे लेके आएंगे, तो VCC माइनस VCE हो जाएगा डिवाइडेड बाय RC होगा,
एंड वी विल हैव द IC जिस तरह हमने IB के लिए किया हुआ था. The voltage across the reverse biased collector base junction is VCB is equal to VCE minus VBE. चूंकि तीन हमारे पास वोल्टेजेस थे इस पूरे ट्रांजिस्टर के क्रॉस, एक VBE था, एक VCE था और एक VCB था. इन केस अगर हमें VCB चाहिए तो वो इन बाकी दो के डिफरेंस के बराबर होगा. VCE हमेशा VBE से लार्जर होता है बिकॉज ऑफ द कलेक्टर बैटरी RVCC बैटरी, एंड VB जो है वो नॉर्मली फिक्स्ड वोल्ट है 0.7 बिकॉज ऑफ द जंक्शन, यानी VCE रिवर्स बाइस के क्रॉस है और VBE चूंकि फॉरवर्ड बाइस के क्रॉस है तो नॉर्मली हमारे पास जो VCE होगा वो VBE से हम लार्जर ही होता है. ठीक है. An example is given where we have to determine the IB, IC, IE. तीन हमें करंट्स मालूम करने हैं. Then we have to find the VBE, VCE and VCB. तीन हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप्स हमने मालूम करना है. सर्किट हमें गिवन है. यहाँ पर देख सकते हैं कि बीटा की वैल्यूज भी प्रोवाइड की गई है एंड दैट इज इक्वल टू 150. So first of all we have to find the IB. IB मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला गिवन है VBB माइनस VBE डिवाइडेड बाय RB. अब VBB की वैल्यू भी मौजूद है, RB की वैल्यू भी मौजूद है, लेकिन VBE हमने फाइंड नहीं किया अभी. तो हमारे पास इस फार्मूला में दो चीज़ें अनस्पेसिफाइड है या अननाउन है, IB भी है और VBE भी है. तो हम क्या करते हैं, चूंकि हमें पता है कि ट्रांजिस्टर सिलिकॉन मेड है और VBE फॉरवर्ड बाइस जंक्शन है, तो सिलिकॉन फॉरवर्ड बाइस में अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.7 वोल्ट कंज्यूम करता है या ड्रॉप करता है. सो हम सपोज कर लेंगे कि VBE जो है वो 0.7 वोल्ट के बराबर है. नाउ कैलकुलेट द बेस कलेक्टर एंड एमिटर करंट एज फॉलोज. अब फार्मूला में हमारे पास एक ही चीज़ अननोन है और वो है IB. तो VBB की वैल्यू डाल देंगे 5 वोल्ट, VBE की वैल्यू हो जाएगी 0.7 वोल्ट और RB जो है वो 10 किलो ओम के बराबर है. सो वी विल हैव 430 माइक्रो एम्पियर एज अ IB. सिमिलरली IC के लिए बीटा IB का फार्मूला है बीटा 150 गिवन है, IB हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं. सिंपली मल्टीप्लाई करने से वी विल हैव द वैल्यू ऑफ द IC विच इज इक्वल टू 64.5 मिली एम्पियर. IE के लिए भी फार्मूला गिवन है कि दैट इज द सम ऑफ IC एंड IB. सो दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे एंड वी विल हैव द 64.9 एज अ IE. तो हमारे पास तीन करंट्स की वैल्यूज हमने मालूम कर ली हैं, IB, उसके बाद IC और उसके बाद IE. Now solve for the VC and VCB such that VCE is equal to VCC minus ICRC. VCE के फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला ऑलरेडी गिवन था जो कि VCC माइनस ICRC के बराबर था. VCC की वैल्यू भी गिवन है एंड दैट इज 10 वोल्ट इस केस में, और IC भी हमने मालूम कर लिया है. RC भी गिवन है विच इज 100 ओम. तो आप सिंपली 100 ओम को IC के साथ मल्टीप्लाई करें. मल्टीप्लाई करने के बाद जो VCC था 10 वोल्ट उसमें से माइनस करें एंड यू विल हैव 10 वोल्ट माइनस 6.45 विच इज इक्वल टू 3.55 वोल्ट एज अ VCE के बराबर आ गया. VBE हम ऑलरेडी एज्यूम कर चुके हैं जो कि 0.7 वोल्ट के बराबर था. VCE हम फाइंड कर चुके हैं. दो चीज़ें मौजूद हैं तो तीसरी चीज़ मालूम की जा सकती है. अकॉर्डिंगली VCB इज इक्वल टू VCE माइनस VBE. तो VCE से VBE को माइनस करें, you will have 3.55 volt minus 0.7 and that is equal to 2.85 volt. Since the collector is at a higher voltage than the base, so the collector base junction is reverse biased. Now the collector characteristic curve. Using a circuit as given in the figure, we can generate a set of collector characteristic curve. BJT ट्रांजिस्टर के लिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व कैसा होगा या कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक कर्व कैसा होगा, ये हम जनरेट करते हैं इस डायग्राम को इस्तेमाल करते हुए. शोइंग हाउ द कलेक्टर करंट IC varies with the collector to emitter voltage VCE for specified values of the IB यानी बेस करंट. ये जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व हम शो करेंगे, चूंकि दैट विल बी द VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व यानी वोल्टेज और करंट का रिलेशन आपस में शो होगा. तो करंट हमारे पास IC होगा जिसको हम कह सकते हैं कलेक्टर करंट, और वोल्टेज जो है वो VCE है यानी वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर टू एमिटर. और IB की मौजूदगी में देखेंगे
कि IC और VCE का आपस में क्या रिलेशन है इन द प्रेजेंस ऑफ द IB। अगर IB 0 है तो इसका मतलब है IC भी 0 होगा, VCE भी 0 होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास IB 0 होने का मतलब है कि एम्प्लीफिकेशन या स्विचिंग या ट्रांजिस्टर जो है वो ऑपरेट ही नहीं हो रहा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि IB की प्रेजेंस में IC और VCE का क्या रिलेशन होगा। Assume that VBB is set to produce a certain value of IB and VCC is 0। स्टार्ट में हम सपोज कर लेते हैं कि VBB की कुछ ना कुछ वैल्यू मौजूद है और वो हमें IB जो है वो प्रोवाइड कर रही है, लेकिन VCC अभी हमने इस्तेमाल ही नहीं की, VCC की वैल्यू अभी इक्वल टू 0 है। सो फॉर दिस कंडीशन यानी हमारा बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड वाइज में एस्टेब्लिश्ड है और IB हमें मिल रहा है बिकॉज ऑफ द VBB, लेकिन VCC की कोई कंट्रीब्यूशन अभी नहीं है। सो बोथ द बेस एमिटर जंक्शन एंड द बेस कलेक्टर जंक्शन आर फॉरवर्ड वाइज्ड। क्योंकि बेस एमिटर जंक्शन तो VBB की वजह से फॉरवर्ड वाइज में है और बेस कलेक्टर जंक्शन में अभी हमने VCC अप्लाई नहीं की, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि इस वक्त वो फॉरवर्ड बाइस मोड में है। Because the base is approximately 0.7 volt while the emitter and the collector are at 0 volt. So the base current is through the base emitter junction because of the low impedance path to the ground and therefore IC is equal to 0. चूंकि VCC हमारे पास 0 है और बेस में जितना भी करंट है that is because of the base emitter junction या that is because of the VBB, सो लो इम्पीडेंस पाथ की वजह से वो इसी लूप के अंदर ही सर्कुलेट हो रही है और IC हमें इक्वल टू 0 मिल रहा है। When both junctions are forward bias, the transistor is in the saturation region of its operation। और इस कंडीशन को हम saturation कंडीशन कहते हैं कि मैक्सिमम फ्लो जो है उसमें से पॉसिबल होगा, क्योंकि IB की वजह से जो जंक्शन है बेस एमिटर जंक्शन और बेस कलेक्टर जंक्शन दोनों जो है वो इस वक्त फॉरवर्ड बायस मोड में है। Here you can see that IC versus VCE curve for one value of IB। अगर IB मौजूद है, कोई एक वैल्यू आप सपोज कर लीजिएगा, तो उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक कर्व कैसा बनेगा। Here you can see that is the saturation region, that is the active region and that is the breakdown region। हम देख सकते हैं कि जो saturation region है that is up to the 0.7 volt mark। वर्टिकल एक्सिस IC को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी करंट इस वर्टिकल एक्सिस के साथ इंक्रीज हो रहा है, जबकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो VCE को रिप्रेजेंट करता है। तो IC और VCE का रिलेशन शो किया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ए IB। यहाँ पर IB की वैल्यू हमें गिवन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस सेकेंड फिगर में देखें तो हमें और ज्यादा क्लियर होगा। फैमिली ऑफ ए IC वर्सेस VCE कर्व्स फॉर सेवरल वैल्यूज ऑफ ए IB स्टार्टिंग विद द IB इक्वल टू 0। अगर IB हमारे पास इक्वल टू 0 है तो बेस एमिटर जंक्शन जो है वो ब्लॉक होगा, यानी रिवर्स बाइस में होगा, और इस वक्त हमारे पास अगर IC या VCC मौजूद भी है तो वो फ्लो नहीं कर सकेगा, और फ्लो न करने का मतलब है कि दैट इज नेग्लिजिबल करंट, और ये जो रीजन होगा दैट विल बी टर्म्ड एज अ कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन से मुराद कि यहाँ पर हमारे पास बावजूद इसके कि VCC और IC मौजूद है लेकिन वो फ्लो नहीं हो सकता क्योंकि IB जो है वो 0 है। फिर अगर IB की वैल्यू कुछ ना कुछ मौजूद है, VBE जो है फॉरवर्ड बाइस में आ चुका है, तो हम कह सकते हैं कि IC की वैल्यू VCE पे डिपेंड कर रहा है। अगर VCE की वैल्यू बढ़ेगी तो उसके साथ साथ IC की वैल्यू भी बढ़ रही है, लेकिन एक लिमिट तक। उसके बाद फिर हम देख सकते हैं कि लेट्स से सैचुरेशन ख़त्म हो गया और हमारे पास IC की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट है। फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि हमारे पास ब्रेक डाउन अगर हो जाता है। ये चीज़ समझने के लिए अगर हम यहाँ पर देखें, ये जो रीजन है इसको हमने सैचुरेशन कहा हुआ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ओम्स लॉ अप्लाई हो रहा है कि वोल्टेज बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ हमारे पास करंट भी बढ़ रहा था। फिर एक पॉइंट ऐसा आ गया पॉइंट P कि जहाँ पर हम वोल्टेज को मजीद बढ़ा रहे हैं लेकिन हमारा करंट जो है वो न होने के बराबर बढ़ रहा है, यानी उसकी इंक्रीज जो है वो बहुत कम हो रहा है। एट पॉइंट C हम देख सकते हैं कि मामूली सा भी वोल्टेज बढ़ाएंगे
तो हमारे पास करंट में जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। और ये जो पॉइंट है, नाउ दैट इज वी आर ऑपरेटिंग आवर ट्रांजिस्टर इन डेंजर जोन, जिसको हम ब्रेक डाउन रीजन कहते हैं, कि यहाँ पर दोबारा करंट फ्लो तो शुरू कर देगा, लेकिन बहुत चांसेस है कि आपका डिवाइस जो है वो डैमेज हो जाए। यानी यहाँ तक हम इस पॉइंट तक VCE को मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। फिगर बी में हम देख रहे हैं कि जो हम करंट IB की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो उसके रिलेशन के साथ साथ या उसके साथ रिलेटिव IC की वैल्यू भी बढ़ रही है। ठीक है, तो IC जो है वो IB की वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है। अगर IB की वैल्यू कम होगी तो IC भी कम होगी, IB की वैल्यू बढ़ाएंगे तो उसके साथ साथ IC की वैल्यू भी बढ़ेगी। That is the explanation of the previous curve, जो कि हम already explain कर चुके हैं। फिर भी as VCC increased, VCE increases gradually as the collector current increases। यानी VCC बढ़ा हो तो उसके साथ VCE और IC दोनों increase हो रहे हैं, indicated by point A and B in figure 4.9b। IC increases as VCC increases because VCE remains less than 0.7 due to the forward bias base collector junction। Ideally when VCE exceeds 0.7, जैसे ही VCE 0.7 से बढ़ेगा, the base collector junction becomes reverse bias and the transistor goes into the active or linear region of its operation. On the base collector junction, once the base collector junction is reverse biased, IC levels off and remain essentially constant for a given value of IB as VCE continues to increase. Actually, IC increases very slightly as VC increases due to the widening of the base collector depletion region। अब ये फिगर में जो हमने देखा कि हमारे पास एक पॉइंट A तक हमारे पास ओम्स लॉ के तहत VCE बढ़ रहा था तो IC भी बढ़ रहा था, और फिर उसके बाद जो है वो फ्लैट हमें मिल रहा था। सो दैट इज बिकॉज ऑफ कि हमारे पास जो बेस कलेक्टर जंक्शन है वो स्टार्ट में ओपन होता है, यानी फॉरवर्ड बाइस में होता है, और फॉरवर्ड बाइस में होने का मतलब है कि वो करंट को रेजिस्ट नहीं कर रहा था। लेकिन जब वो रिवर्स बाइस पे आ जाता है, अब ब्लॉकेज शुरू हो जाती है, और अब अगर आप VCE को बढ़ाते भी हैं तो आपका IC जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। फिर एक पॉइंट आ जाता है जिसको हमने VCE मैक्सिमम कहा, कि जहां पर हमारे पास ब्रेक डाउन आकर हो जाएगा और करंट जो है IC वो रैपिडली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और हमारे डिवाइस को डैमेज कर सकता है। This results in fewer holes for recombination in the base region, which effectively causes a slight increase in beta DC। यानी बहुत मामूली increase आ रहा था यहाँ पर, shown by point B and C, जिसको हमने active region कहा। When VCE reaches a sufficiently high voltage, जब VCE बहुत ज़्यादा high होगा, the reverse bias base collector junction goes into breakdown। तो हमारे पास ब्रेकडाउन कंडीशन जो है वो अकर होगी, एंड द कलेक्टर करंट इंक्रीज रैपिडली, कलेक्टर करंट जो है वो रैपिडली इंक्रीज होगा, इंडिकेटेड बाय पॉइंट सी इन फिगर 4.9b। A transistor should never be operated in this breakdown region। A family of collector characteristic curve is given in 4.9c on the next slide, where when IB is equal to 0, the transistor is in the cutoff region, although there is a very small collector leakage current। बहुत negligible collector current था, तो इस वजह से हम उसको कट ऑफ रीजन कंसिडर करते हैं। The amount of collector leakage current for IB is equal to 0 is exaggerated on the graph for illustration। इसको बड़ा करके शो किया गया है ताकि आपको समझ आ जाए और आप उसको देख सकें। An example is given where we have to sketch an ideal family of a collector curves। यानी हमने इस डायग्राम, इस ट्रांजिस्टर के लिए कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है वो ड्रा करना है। Here IB is equal to 5 microampere to 25 microampere in 5 microampere increments। यानी हमारे पास जो IB है वो 5 माइक्रो से लेकर 25 माइक्रो तक होगा और 5 माइक्रो के इंक्रीमेंट्स होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि IB1, IB2, IB3 में 5 माइक्रो एम्पियर का इंक्रीमेंट होगा। बीटा DC की वैल्यू गिवन है, दैट इज इक्वल टू 100 एंड VCE डज नॉट एक्सीड ब्रेकडाउन। VCE जो है वो
ब्रेकडाउन से एक्सीड नहीं हो रहा। सो हियर यू कैन सी दैट बीटा डीसी की वैल्यू भी गिवन है, वीबी भी वेरिएबल है, वीसीसी जो है वो शोन है दैट इज वेरिएबल। तो इसके लिए हमने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है वो ड्रॉ करना है। Now using the relationship beta is equal to IC divided by IB, yeah, we can say that IC is equal to beta IB. So values of IC can be calculated using this formula. The resulting curves are plotted in figure 4.11 on the next slide. So these are the ideal curves because the slight increase in IC for a given IB as VC increase in the active region is neglected. कुछ चीजें जो है वो नेगलेक्ट की गई हैं, तो इस वजह से यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट कर्व जो है वो शो किया गया है। IB की वैल्यू 5 माइक्रो एम्पियर, फिर नेक्स्ट जो है वो 10 माइक्रो एम्पियर, अगला 15, फिर 20 और फिर 25। तो IB की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है और हम 5 माइक्रो एम्पियर का इंक्रीमेंट और फिर वो पॉइंट जो हम कर्व पे भी जो है वो ड्रॉ करेंगे, शो करेंगे। जब 5 माइक्रो एम्पियर होगा और बीटा के साथ हम इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल हैव 0.5 मिली एम्पियर एज द IC। फिर 10 के लिए 1 मिली एम्पियर, 15 के लिए 1.5, 20 के लिए 2 एंड 25 माइक्रो एम्पियर के लिए 2.5 मिली एम्पियर की जो है वो IC की वैल्यू मिल रही है। तो जब IB 5 माइक्रो एम्पियर है उस वक्त IC की वैल्यू 0.5 मिली। आप देख सकते हैं कि हमारा जो IC है वो IB के मुकाबले में 100 टाइम्स ग्रेटर है। अब हम इन वैल्यूज को ड्रॉ करते हैं, सो यू कैन सी दैट कि 0.7 जो है इस वक्त तक हमारे पास सेचुरेशन रीजन है। तो जब हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं इसके साथ करंट बढ़ रहा है। IB 5 में माइक्रो एम्पियर के लिए IC की वैल्यू जो होगा वो 0.5 मिली एम्पियर है। IB के 10 माइक्रो एम्पियर के लिए 1 मिली एम्पियर, IB के 15 माइक्रो एम्पियर के लिए IC की वैल्यू 1.5 एंड सो ऑन। IB 25 माइक्रो एम्पियर के लिए IC की वैल्यू जो होगी that is equal to 2.5 milliampere. So that is representing the collector characteristics of the given transistor. What is cutoff? As previously mentioned, when IB is equal to 0, so transistor is in the cutoff region as shown in figure. Under this condition, there is a very small amount of a collector leakage current represented by ICEO due mainly to thermally produced carriers usually neglected. आप देख सकते हैं कि कट ऑफ से मुराद क्या है कि जब हमारे पास IB की वैल्यू 0 होगी तो ये जो बेस एमिटर जंक्शन है ये रिवर्स बाइस में होगा, या आप कह लें कि ये रास्ता जो है वो ब्लॉक है या ऑफ है। सो द ट्रांजिस्टर इज इन कट ऑफ रीजन। तो हमारे पास इस कंडीशन में सिवाय एक लीकेज करंट के और किसी किस्म का करंट फ्लो नहीं हो सकेगा। इस लीकेज करंट को हम ICEO से रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखें फार्मूला ऑलरेडी गिवन है कि IC जो है वो बीटा IB के बराबर है, हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं। तो अगर IB 0 है तो इसका मतलब है कि IC 0 है। तो IC मेजरली उसके कोई वो नहीं है, वैल्यू नहीं है, वो इक्वल टू 0 है। उसके बावजूद भी अगर हमें करंट मिल रहा है सो दैट इज अ लीकेज करंट, जिसको हमने ICEO से रिप्रेजेंट किया हुआ है। In cutoff, both the base emitter and base collector junction are reverse biased. Similarly, what is a saturation? When the base emitter junction becomes forward bias, जब base emitter junction forward bias होगा और IB की वैल्यू भी increase होगी, so the collector current also increases as the relation is IC is equal to beta IB, and then VCE decreases as a result of more drop across the collector resistor. RC के across voltage drop ज़्यादा हो रहा है तो VCE की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है। सो VCE is equal to VCC minus IC, RC फार्मूले के थ्रू हम ऑलरेडी मालूम कर सकते हैं, that is shown in the figure. यानी IB की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इसके साथ साथ आपकी IC की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। When VCE reaches its saturation value, जब VCE की वैल्यू इसकी saturation तक पहुंच जाएगी, the base collector junction becomes forward bias. Base collector junction forward bias में होगा and it can increase no further
even with a continued increase in IB। अब अगर आप IB की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे भी तो VCE में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अ VCE सैचुरेशन, यानी यहाँ पर सैचुरेट हो चुका है, जो मैक्सिमम कैपेसिटी थी इसकी फ्लो करने की वो ऑलरेडी हमें दे रहा है। What is next in lecture number 15? In lecture number 15 we will discuss the BJT as an amplifier। we will discuss the amplification and the term amplifier के amplification क्या है, amplifier क्या होता है। we will also discuss what are the DC and AC quantities, the voltage amplification, the BJT as a switch। देखें BJT को हम दो मेन BJT के दो मेन फंक्शंस हैं, या तो हम उसको एज एम्पलीफायर के तौर पर यूज़ करते हैं या हम उसको एज ए स्विच के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो लेक्चर नंबर 15 में हमने ये दोनों जो इसके फंक्शंस हैं वो डिस्कस करने हैं। सो व्हाट इज स्विचिंग, ऑन ऑफ कंडीशन क्या होते हैं, स्विचिंग ऑपरेशन कैसा होगा, कंडक्शन इन कट ऑफ कैसा होगा एंड कंडक्शन इन सैचुरेशन कैसा होगा। वी विल आल्सो डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ ए ट्रांजिस्टर स्विच। Thank you. So that is all for today. If you have any question, you can ask me through my email address shahid.csit@sud.edu.pk. Once again, thank you very much.